वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री की काइंड्स क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। जनरली पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। Subjective poetry suggests that the poet is primarily concerned with conveying personal experience and feeling as an autobiography. पोएट्री की टू काइंड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव एंड सेकंड है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है उसमें जो पोएट सजेस्ट करते हैं प्राइमरी कंसर्न को कन्वे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, जैसा कि ऑटोबायोग्राफी। Subjective is considered by many competent critics to be the ultimate test of lyric as distinguishes from epic, ballad or purely narrative poetry. Or whatever or not, it is wise to make subjectivity the final court of appeal. Its presence in all the finest lyrical verses cannot be denied. For example, a lyrical poetry is subdivided into the elegy, the ode and the sonnet. But the objective poetry, on the contrary, suggests that the poet is outside the artistic world. He stands, directs, and expels himself out the work. Impersonal or objective poetry may be divided into narrative and dramatic poetry. Narrative poetry is further divided into the ballads, the epic, metrical romance, and the idyll. तो ये हो गया हमारे पास काइंड्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के काइंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। द डिवीजन ऑफ पोइट्री टेक्स प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोएट्स प्रिजर्वेशन ऑफ हिज मटीरियल। द डिस्टिंक्शन इज सिंपल। फर्स्ट वन इज इन ड्रामेटिक पोइट्री द पोएट्स लेट्स द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी स्पीक देयर ओन वर्ड्स। ड्रामेटिक पोइट्री में जो पोइट होते हैं, करेक्टर जो स्टोरी में बोल रहा होता है उसके अपने वर्ड्स होते हैं। इन लिरिकल पोइट्री में क्या होता है, द पोइट स्पीक हिज ओन मूड्स, थॉट्स एंड इंस्पायरेशंस। इन नैरेटिव पोइट्री द पोइट टेल्स अ स्टोरी एज इफ ही हैड बीन अ स्पेक्टेटर बट नॉट पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। अंडरस्टूड? एन एपिक इज एन लॉन्ग नरेटिव पोइम। सो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो एपिक होती है वह लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है, डीलिंग विद ह्यूरिक इवेंट, यूजुअली विद सुपरनेचुरल एलिमेंट एंड पार्टिसिपेशंस इन द एक्शन। फिफ्थ हमारे पास है एंड डिडक्टिव पोएट्री that which teach or point a moral was once popular and is still encountered. It is regarded at best as a low flight of poetry. A long-winded narrative in the first person telling the poet's own adventures might be classed with reason as any of the narrative poetry because it tells a story. Dramatic like a long dramatic monologue, and lyric because the poet himself is speaking. The attitude classification is not of the primary importance. Next point हमारे पास है function of poetry. According to Plato, true reality consists of the ideals of things which individual objects are but reflection or imitations. Aristotle does not concern with Plato. The fact Aristotle says do not simply imitate or represent particularly event or situation while he happened to have noted or invented. He handles them in such that he brings out their universal and characteristics element. Referring to the universal personality of Plato, William changing he remarked, most joyfully let the poet be, it is though that all men see. The sole purpose of poetry, says D.H. Lawrence, is to discover a new world within the known world. Let me elaborate this point. It opens up new avances of thoughts and new vista of feeling. Poetry strings all the thing of clothes, of familiarity, and enables us to visualize them in their true color and shapes.
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।